Jai Guruji. Guruji has been my lifeline. He's been my God, and he will always remain to be. I'll share a satsang. Like there would be times when Guruji would make me share my satsangs with the sangat, and if the previous day I had spoken for a long time, he would just look at me and he would tell me, "Short mein sunai, lamba ghoda na nahi." So that's exactly what I'll do. Guruji, aapko pranam. In 2005, my son was very unwell. He was just about a year and a half old, and he had very severe chest congestion, repeated ear infections, lot of wheezing. He had to be on antibiotics for months and months together, and he would get prolonged fever. And I would always wonder कि गुरुजी इसको bless कर दें, इसको ठीक कर दें. मैं इतने ENT doctors के चक्कर लगाती थी. Like he would just have repeated ear infections all the time. And one day I was really feeling very sad that this little child, there would be nights when I would sit up with him and he would be in my godi and I would make him sleep because he had such bad wheezing and congestion. It used to be very traumatic for him. And of course for me also as a mother. And like several months, almost over a year went on like this. And one fine day the ENT doctor told me that, we have to do his surgery. And even his tympanogram, like his reports are not very good now. And it's better that we do his surgery. So that day I was little upset and I said, "Acha, we can't avoid this. अब तो कुछ नहीं कर सकते." So I went to Guruji's. I sat एकदम शांति से मैंने जाके गुरुजी के पैर छुए और बैठी, लंगर खाया. थोड़े टाइम के बाद गुरुजी कहते हैं, "चलो बड़े मंदिर." And I just felt कि चलो आज गुरुजी बड़े मंदिर ले जा रहे हैं. It was in the month of December. बहुत ठंड थी उस दिन रात को. So we all went to the बड़े मंदिर. वहाँ पे हम गए, बैठे. Now the visits to Bade Mandir, as we all call it, Guruji ka ashram today, they used to be magical experiences that time. I would fondly call it my visit or my trip to Disneyland. So हम गए अंदर, बैठे हुए थे, गुरुजी भी बैठे थे नीचे ही वहीं पे एक पिलो लगा के आराम से. बस मैं गुरुजी के थोड़ा पास ही बैठी थी. And I was just thinking quiet, no conversation with Guruji, nothing that day. So suddenly Guruji looked at me and he said, "Pareshan hai?" And I just looked towards him and I said, "Hanji." He didn't ask me anything, but I just kept praying in my heart that I just wanted my son's surgery to be avoided. Suddenly Guruji stood up and he did an ishara and he walked out of the main hall of the mandir. And obediently I followed behind him. उन्होंने कुछ नहीं बोला. हम शिव जी की मूर्ति के आगे से गए और बस वहाँ पे पैसेज में वहाँ जाके खड़े हुए गुरुजी. And suddenly he looked around and I just stood beside him and he just asked me कि कदों दी डेट दिती है तेनों डॉक्टर ने. So I was surprised. I hadn't mentioned my experience with the doctor or like my visit to the doctor with him as yet. And I told him कि Guruji 24th December. So he looked up, he looked around. He didn't say anything. All he said was, "चौबीनों लंगर खान आ जाए." And for a minute I was shocked and I just felt कि ये क्या हो गया? What is Guruji saying? Is there some miscommunication? शायद गुरुजी को मैं समझा नहीं पाई ठीक से या उनको बता नहीं पाई कि 24 तारीख को तो सर्जरी होगी तो मैं लंगर कैसे खाने आऊंगी. गुरुजी ने कुछ नहीं बोला. उन्होंने कहा चलो छुट्टी. He just gave me आज्ञा and I left. I kept wondering throughout while coming back home कि अच्छा चलो गुरुजी के मन में कुछ होगा. I hope there is something good in store for this. So the next evening I had an appointment with the ENT. I went. My son went with me. We had to repeat a test of his. That was a tympanogram that had to be done. And we did that test. So when my turn came after finishing that test, I went inside the doctor's room. He saw the reports and the doctor was shocked. He was absolutely amazed. And he just looked up and all he said to me was, "I think I will have to cancel the OT booking for the 24th at the hospital." I was so relieved. My son's report was so much better. What I wanted for such a long time happened that day. Miraculously, Guruji healed him, cured him. He was so much better that we did not need the surgery. That day and today, with Guruji's blessings, he's never had to go through a surgery for this kind of a problem. I thank Guruji profusely. And sure enough, on the 24th, I was sitting in Guruji's darbar, having langar, seeking his blessings. Now my dilemma on the before this happened was
कि इस साल तो मतलब मैं न्यू ईयर ईव भी नहीं मना पाऊंगी गुरुजी के साथ, बिकॉज अगर 24 को सर्जरी होगी दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को तो गुरुजी के जा ही नहीं सकते। और गुरुजी इतने प्यार से बड़े मंदिर में न्यू ईयर ईव पे बुलाते थे, इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, और हम सब नया साल गुरुजी के साथ मनाते थे। But I was so happy I could celebrate New Year's Eve with him that year. Of course, 24th I ate Langar Prasad like he had said, his hukum, his blessings. It's just and just about faith. I just kept praying to him. You know, this was one time when I had no communication with Guruji about the surgery or anything. It was such a miraculous blessing. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज के लिए। जब गुरुजी, और उसी साल जब न्यू ईयर ईव पे फंक्शन हुआ था वहाँ पे, तो इतने अच्छे से हमने मजे करे थे वहाँ पे गुरुजी, और इतनी ठंड होती थी। इट वॉज सच एन अमेजिंग लाइक एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी। कहाँ इन माई माइंड आई हैड थॉट कि नहीं, अब वो साल तो किसी भी हाल में मैं नहीं जा पाऊंगी, पर जो गुरुजी की इच्छा होती है, जो गुरुजी ने हमारे लिए प्लान किया होता है, वो ही होता है। एंड जिस तरह से गुरुजी हमें मंदिर में प्यार देते थे और इतना भर भर के लंगर खिलाते थे, उनकी लंगर में इतनी ब्लेसिंग्स होती थी। आज भी मुझे देख के इतनी खुशी होती है जब संगत इतनी बढ़ गई है। देयर लैक्स एंड लैक्स ऑफ संगत हु कम टू सी गुरुजी's blessings today in comparison to the years then. And Guruji would often tell us, इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, देखी चलो तुसी लोग की। And so many of us in the Sangat would wonder, you know, how will so many people reach here? I'm talking like almost 18-20 years back. So how will so many people reach here? कैसे होएगा? And Guruji used to be so confident. Just what he could foresee, he used to foretell us. And that's exactly what happens. There is so much Sangat. Guruji सारी संगत को bless करते हैं। सबको इतने प्यार से लंगर प्रसाद इतने प्यार से मंदिर में मिलता है, और हम सब वो प्रसाद धारण करते हैं, और गुरुजी की एक एक संगत को ब्लेसिंग मिलती है। देयर इज नोबडी हु गोज विदाउट अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी की, लाइक वी जस्ट हर्ड इन अंकल्स सत्संग प्रीवियसली, हमारी झोलियां छोटी पड़ सकती हैं, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं होती। विद गुरुजी's blessings, it is all about his timing, all about his timing, and I can never thank him enough for all his blessings. I'll share another small experience which happened in 2016, just few years back. I think around the 2nd or the 3rd of July, I had gone to watch a movie, और मैं वहां पे पॉपकॉर्न खा रही थी। तो वो जो पॉपकॉर्न था वो बहुत हार्ड था, तो मैंने बहुत लाइक स्ट्रेंथ लगा के उसको च्यू करने की कोशिश करी, बट आई वॉज नॉट एबल टू च्यू इट, एंड just trying to do that repeatedly, I damaged 2 of my lower teeth. By the time I came back home, मुझे बहुत severe pain था मेरे दांत में, और मेरे गम में बहुत swelling हो गई थी। तो the next morning I went to the dentist and he told me that you have cracked your teeth. I was very upset and I could not eat, I could not chew anything. He said इतनी swelling भी हो गई है कि 5 दिन तक एंटीबायोटिक खाओ, फिर मैं आपका रूट कनाल करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, I'll come after 5 days. 7th जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। बड़े मंदिर में बैठी थी और बस मैं गुरुजी को ये प्रे कर रही थी, गुरुजी किसी तरह मेरे को आज प्रसाद खाना है, मुझे जो भी प्रसाद हो, आई हैव टू च्यू इट। एंड माय डियर संगत, यू वोंट बिलीव इट, गुरुजी कृपा, गुरुजी ब्लेसिंग्स, मैंने धीरे धीरे करके सारा प्रसाद खाया। रात को लेट तक मंदिर में रही, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, एंड आई जस्ट प्रे टू गुरुजी, गुरुजी मैं मंदिर आती रहूं और ये प्रसाद मैं खाती रहूं। आई डोंट वांट लाइक यू नो माय टूथ इन्फेक्शन टू ग्रो सो मच that I'm not able to eat this. I went back home and I thanked Guruji for his blessings, for his darshan, everything. The next morning, on the 8th of July, I had an appointment with my dentist at 9 o'clock. He'd given me an appointment for 9. He said, you come first thing in the morning because it's 2 of your teeth, so thoda time lag jayega. I got up, prayed to Guruji, went to the dentist. He was there. I sat on the dental chair. He checked my teeth and he said, what have you done? Your teeth have healed. मतलब लिटरली वो छोटे छोटे जो हैमर्स होते हैं डेंटिस्ट के, उनसे वो नॉक करके मेरे टीथ पे देख रहे थे। मुझे कोई पेन नहीं थी, कुछ नहीं था। आई जस्ट हैड गुरुजी's डिवाइन प्रसाद इन द मंदिर। आई प्रेड टू हिम फॉर हीलिंग मी एंड फॉर लेटिंग मी ईट हिज प्रसाद ऑलवेज, एंड ही हील्ड मी, ही मिराक्युलसली क्योर्ड मी, हील्ड माई टीथ फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी, आई कुडंट थैंक हिम इनफ। विद इन 2 or 3 minutes
my dental appointment was over and my dentist asked me, please tell me, how has this happened? This has never happened. I have been a dentist for so many years. And I shared Guruji's experience with him and he said, really, is this the Guruji whose mandir is ahead of Chhatarpur Mandir? I said, yes. He said, मैं जरूर जाऊंगा. I said, अब जरूर जाना. So then he just jokingly said, हाँ पर अगर मेरे सारे पेशेंट ऐसे ठीक होने लगे तो I said, बहुत अच्छा होगा, आपके लिए और ब्लेसिंग्स मिलेंगी. और वो भी गुरुजी के जाने लग गए. तो गुरुजी अलग अलग तरीकों से सारी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं. जैसा कि हमने देखा है, जगह जगह गुरुजी की संगत बढ़ गई है पर गुरुजी का प्यार उतना ही बढ़ता जाता है. फॉर एवरी संगत इट्स अबाउट फेथ, एंडलेस फेथ इन गुरुजी एंड जस्ट पासिंग थ्रू दैट टेस्ट. गुरुजी सबका टेस्ट लेते हैं, सबका. देयर इज नोबडी whom he doesn't test. Like Guruji used to always say, अपने किंतु परंतु बाहर छोड़ के आया करो. So it's just about leaving your ifs and buts outside. And I really hope and pray that Guruji keeps blessing everyone. He keeps his kripa on everyone. Thank you so much. And especially during these trying times, Guruji बस अपनी कृपा सब पे, भरपूर कृपा सब पे बनाए रखें. Thank you so much. Thank you Gaurav भैया for this beautiful opportunity. बार बार मुझे सेकंड टाइम आज गुरुजी की ब्लेसिंग से, आपकी सबकी संगत की इतने प्यार से आज फिर सत्संग करने का मौका मिला. जय गुरुजी. थैंक यू अंकल. जय गुरुजी.